Dear students, we are starting the first topic of the first chapter, that is Coulombs Law. Coulombs Law is similar to law of gravitation. In the gravitation, the attraction force is between the two mass particles, and that force was depending on product of the masses and inversely proportional to square of the distance. Similarly, here two charge particles will be there. See, this is one charge particle Q1, this is another charge particle Q2, and they are held with certain separation. Then this is repelling this along this. This repulsion force, see, it acts along the line joining these two charges. ये दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने से जो लाइन मिला वो लाइन के अनुसार रिपल किया जाता. That means what? A F bar 21 force, repulsion force, applied on Q2 by Q1. Similarly, Q2 will apply on Q1 along this direction. That is F bar 12. Means what? Both the forces, दोनों forces किस दिशा में हैं? वो दोनों directions which are parallel to the line obtained by joining the charges. These two forces are equal in magnitude. If one force is called action, other force is called reaction. And these magnitudes are equal, that we are calling F. This F depends on product of the charges and inversely on square of the distance. This is called Coulombs law. That is what I wrote here. Whenever two point charges are held with certain separation in vacuum or in any medium, they attract or repel depending on nature with a force which is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to square of the distance between them. But only the difference between Coulombs law and gravitational law is what? There depends on masses, but here depends on charges. And one more difference is, here in gravitational law, the force doesn't depend on the medium what is present between the two masses. But here, electrostatic force F, that is Coulombic force, this force depends on the medium what is present between the charges. If no medium is there between the two charges, means what? A charge से लेके A charge तक बीच में medium कुछ भी नहीं रहा तो, मतलब vacuum रहा तो, मतलब air रहा तो, free space रहा तो, जब वो force का formula 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. अगर कुछ और मीडियम रहा तो Q1 से लेके Q2 तक बीच में मीडियम कुछ और रहा तो इंस्टेड ऑफ फ्री स्पेस, जब फार्मूला 1/4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square. यहाँ 1/4 pi एप्सिलॉन आया, नहीं तो 1/4 pi एप्सिलॉन 0 आना था. वैक्यूम रहा तो, वैक्यूम नहीं रह के कुछ और रहा तो, कुछ और मीडियम रहा तो चार्ज Q1 से लेके Q2 तक जब कांस्टेंट में डिफरेंस आ रहा है, 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट के स्थान में एप्सिलॉन आ रहा है. The force we are showing is differently attached. Means what? A force, Coulombic force, depends on medium also, which is present between charges Q1 and Q2. It is not there in the gravitation. It was not depending on medium, but here it depends on medium. That's the medium's property should be placed here in the constant of proportionality. Next, and here epsilon is called permittivity of that medium, what is present between Q1 to Q2. Epsilon naught was the permittivity of vacuum, if vacuum was there. Now, epsilon naught, it is a permittivity of vacuum. Its value is practically found as 8.854 into 10 power minus 12 Coulomb square, Newton power minus 1, meter power minus 2. Epsilon means what? It is the permittivity of medium. Now we define another quantity called epsilon r, or it is also shown with K, which is called relative permittivity of the medium. How it is defined? It is defined as the ratio of permittivity of medium to permittivity of vacuum. So this is the definition of relative permittivity, which is also called dielectric constant, which is also called specific inductive capacitance. So ये relative permittivity है ना, epsilon r, उसी को K से भी बताते हैं. ये किस तरह डिफाइन किया गया? Ratio of permittivity of the medium to permittivity of vacuum, that is epsilon divided by epsilon 0. इसे डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस भी बोलते हैं. तो इस तरह हर मीडियम को रिलेटिव परमिटिविटी डिफाइन किया जाता.
Next, second question is why ionic compound sodium chloride है ना, sodium chloride crystal मतलब क्या? When water is not added, sodium chloride, if you check in that sodium chloride, sodium ions are there, chlorine ions are there. Between sodium ion, that is Na plus, and Cl minus, there is an ionic bond. Means what? Electrostatically, according to Coulombs law, they are under attraction. So F is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square. ये Q1 Q2 के स्थान में क्या डालना? सोडियम का चार्ज क्या डालना पड़ेगा? वो इक्वल टू E, क्योंकि सोडियम Na प्लस मीन्स व्हाट? एक चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और क्लोरीन पर भी Cl माइनस, सिंगल माइनस है, दैट्स उस पर भी चार्ज, उस पर का चार्ज भी एक E है. सो दैट्स Q1 के स्थान में E, Q2 के स्थान में E, और वो सोडियम आयन के क्लोरीन आयन के बीच में सेपरेशन Na प्लस और Cl माइनस, क्योंकि आयन रहते किसमें? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में सेपरेशन. एप्सिलॉन 0 1 by 4 एप्सिलॉन 0 क्यों लिखा गया? बिकॉज वो दोनों आयन्स के बीच में फ्री स्पेस है इन केस ऑफ क्रिस्टल. सो जब कितना फोर्स से आयन्स बाउंड होके हैं, कूलम्ब लॉ से पता लगाए. सो ये फोर्स, ये 1 by 4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है ना 9 × 10⁴ वो कांस्टेंट, यू रिमेंबर. सो अगर इफ यू ऐड विथ वाटर, सो देन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को वाटर ऐड करें तो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाएगा. वो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बन जाने के बाद सोडियम आयन के क्लोरीन आयन के बीच में क्या आ जाएगा? अभी फ्री स्पेस नहीं रहता. क्या आएगा? फ्री स्पेस के बिना वाटर मीडियम आ गया. वाटर मीडियम आ गया तो फोर्स का एक्सप्रेशन F डैश विच इज 1 by 4 by एप्सिलॉन लिखना पड़ता है, E स्क्वायर बाई R स्क्वायर. पहले क्या लिखे थे? एप्सिलॉन 0, क्योंकि फ्री स्पेस था सोडियम आयन के क्लोरीन आयन के बीच में. अभी फ्री स्पेस नहीं रहा, वाटर आ गया. सो वाटर मीडियम आने से वाटर का परमिटिविटी लिखना पड़ता एप्सिलॉन. सो ये फोर्स को रेशियो फाइंड. ओके, नेक्स्ट एप्सिलॉन और वाटर का कितना? 80, विच इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर. 80 मतलब एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन 0 इज 80. सो इसी से एप्सिलॉन कितना होता है? वाटर का परमिटिविटी 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन 0. सो दैट इज वाई एफ डैश के आंसर में एप्सिलॉन के स्थान में हम लोग है ना 80 एप्सिलॉन 0 लिखना पड़ता. सो 1 by 80 सेपरेट करें तो जब क्या हो? 1 by 4 by एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R स्क्वायर, मतलब 1 by 80 टाइम्स ऑफ दैट फोर्स. सो मतलब क्या? फोर्स F by 80 बन गया. मीन्स व्हाट? फोर्स बिटवीन द सोडियम आयन एंड क्लोरीन आयन इज रिड्यूस्ड टू 1 by 80. सो इस तरह आयन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स फ्री स्पेस है समय जितना था उतना नहीं रहा. अभी 1 by 80 को कम हो गया. फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया तो ये आयन्स है ना फ्री आयन्स जैसा, ऑलमोस्ट ऑल फ्री आयन्स जैसा बिहेव करते. एंड फ्री आयन्स रहे तो बैटरी लगाने से ये फ्री आयन्स एक दिशा में ड्रिफ्ट करते करंट बन जाएगा. इन दैट वे सोडियम क्रिस्टल आफ्टर एडिंग विथ वाटर इट बिकम्स सोल्यूशन एंड इट इज एक्टिंग एज ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर. Before adding water, those were bound strongly, so those were not acting as a free ions. That is why it was not acting as a conductor. So this is the answer for this. Next, question number 3. Question number 3. Question number 3. Define dielectric constant. Dielectric constant को define करो. सो मैं बोलो ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसे बताते थे? K से बताते, नहीं तो एप्सिलॉन R से बताते. ये 3 नामों से जाना जाता. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक नाम, रिलेटिव परमिटिविटी एक नाम, और एक स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटेंस. अभी एक डेफिनेशन तो मैं बोल चुका ऑलरेडी. क्या? रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन 0 का रेशियो को रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं. लेकिन हम लोग है ना या इमेजिन कर 2 चार्ज पार्टिकल्स है, बीच में वैक्यूम है, नथिंग, मीडियम नहीं है मान ले. जब वो 2 के बीच में अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या? F = 1 by 4 pi एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R स्क्वायर. लेकिन मीडियम डाल दिया मान ले, जब फॉर्मूला क्या बन गया? F डैश 1 by 4 pi एप्सिलॉन Q1 Q2 by R स्क्वायर. तो एप्सिलॉन लिखना पड़ता. अब ये फोर्स का वो फोर्स का रेशियो निकालने से कितना आता? एग्जैक्टली कैंसलेशन हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट आया. मतलब
which is called relative permittivity. मतलब क्या relative permittivity is again equal to F by F dash. So is मतलब relative permittivity which was defined as ratio of permittivity to epsilon permittivity of vacuum can also be defined as ratio of force of repulsion between charges when vacuum is present to force of repulsion between same two charges with same separation when medium is present. So that is what another definition for dielectric constant. That's what I wrote here. Dielectric constant or relative permittivity of any medium is defined as the ratio of electrostatic force between the 2 point charges when they are held in vacuum to that when they are held in given medium with same separation. So that's one. Next, fourth question. If two charges Q1 9 microcoulomb and Q2 12 microcoulomb are in vacuum with separation 100 centimeter, find the force with which they repel. Mention the direction of the each force. अभी यह डायग्राम दिया गया क्वेश्चन में कि हाँ एक्स एक्सिस पर दो चार्ज पार्टिकल्स है, एक Q1 जिसका वैल्यू 9 माइक्रोकूलम, दूसरा Q2 जिसका वैल्यू 12 माइक्रोकूलम, वो दो के बीच में सेपरेशन 100 सेंटीमीटर है. सो दोनों चार्ज पार्टिकल्स क्या करते रहते, रिपल करते रहते. वो रिपल्शन फोर्स कूलम्स लॉ से निकाला जाता. सो कूलम्स लॉ सो ये इसको रिपल करता अलोंग दिस डायरेक्शन, ये इसको रिपल करता अलोंग दिस डायरेक्शन. So this force I am calling F bar 2-1, means what force acting on 2 by 1. And this force I am calling F bar 1-2, means what force acting on 1 by 2, which is like this. So Coulomb's law answer force is given by 1 by 4 pi epsilon 0 9 micro Q1 Q2, means what Q1 9 micro Q2 12 micro. Micro is the number 10 power minus 6 by distance या 100 सेंटीमीटर है दोनों के बीच में, मतलब क्या 1 मीटर है. सो 1 मीटर स्क्वायर Q1 Q2 by डिस्टेंस स्क्वायर इंटू आई कैप किस लिए लिखा गया, क्योंकि ये फोर्स F bar 1-2 है ना, विच इज एक्टिंग ऑन Q2 by Q1, इट इज लाइक दिस, विच इज अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अनुसार यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप है. दैट्स यूनिट वेक्टर साइड में लिख देना. फोर्स के एक्सप्रेशन में यूनिट वेक्टर लिख दिए तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, वो लिखने से 1 से मल्टीप्लाई कर जैसा, सो उसकी वैल्यू में कोई फर्क आता नहीं. लिखने से क्या हुआ, ये फोर्स को वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिए हम लोग. ये फोर्स किस दिशा में है, आई क्या बता देता. अभी सिमिलरली Q2 कितना फोर्स अभी करता है Q1 पर, दैट इज F bar 1-2, वो टुवर्ड्स लेफ्ट एक्स एक्सिस से टुवर्ड्स लेफ्ट में है, मींस व्हाट वी हैव टू यूज माइनस आई कैप. फॉर मैग्नीट्यूड सेम वी हैव टू यूज माइनस आई कैप. इन दैट वे बोथ फोर्सेस हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन. नेक्स्ट